Hello, you're watching HornbillTV's Northeast Express Bulletin. The Assam government had introduced the Shraddhanjali scheme aimed at ensuring the dignified repatriation of mortal remains of individuals from Assam who had passed away outside the state. Conceptualized under the leadership of Chief Minister Himanta Biswa Sarma, the scheme had reflected the state's compassion and commitment to support families during their most difficult times. The official launch had taken place at Lok Sewa Bhawan, Dispur, with detailed information made available on the Seva Sedu portal. Chief Minister Sarma had announced that sons and daughters of Assam who had died due to unforeseen circumstances outside the state would now receive a dignified farewell in their motherland. He had stated that the Shraddhanjali scheme had been launched to ensure proper and respectful repatriation of the deceased. The scheme had been designed to provide timely logistical and financial assistance for the repatriation process, easing both the emotional and financial burden on bereaved families. By doing so, it had ensured that no family was left helpless in the face of tragedy, reinforcing the government's humane approach to governance. Rajya Sarkare eta siddhanto loisile je bohi rajyot কৰ্মসূত্ৰে যোৱা আমাৰ সন্তানসকলৰ কিবা কাৰণত যদি পৰলোক প্ৰাপ্তি হয় তেনেহলে আমি তেওঁলোকৰ পাৰ্থিৱ শৰীৰ শ্ৰদ্ধা সহকাৰে অসমলৈ বা নিজ পৰিয়াললৈ উভতাই আনিম এই আঁচনি আমি ৰাইজক কথা দিছিলো যে 1 অক্টোবৰ 2025 চনৰ পৰা আমি শুভাৰম্ভ কৰিম ৰাজ্যৰ বৰ্তমান পৰিস্থিতিৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত আজি আমি 6 অক্টোবৰ তাৰিখে এই আঁচনিটো বা এই আঁচনিখন ৰাইজৰ উদ্দেশ্যে আমি আগবঢ়াই দিব বাবে ইয়াত উপস্থিত হৈছো অৱশ্যে এই আঁচনিখন আৰম্ভ হোৱাৰ আগতেও এই বিশেষ সেৱা আমি অনানুষ্ঠানিকভাৱে আগবঢ়াই আছিলো আৰু এই বছৰ 24 গৰাকী অসম সন্তানৰ পাৰ্থিৱ শৰীৰ আমি শ্ৰদ্ধা সহকাৰে অসমলৈ উভতাই আনিছো কিন্তু আজিৰ পৰা এই ব্যৱস্থাটোৱে এটা আনুষ্ঠানিক ৰূপ পালে অসমৰ বাহিৰত অধ্যয়ন কৰিবলৈ যোৱা বিশ্ববিদ্যালয় বা আন শিক্ষানুষ্ঠানৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰী বা কৰ্মসূত্ৰে অসমৰ বাহিৰত কাম কৰি থকা আমাৰ অসম সন্তানসকলৰ বাবে এই আঁচনি প্ৰযোজ্য হয় Assam Chief Minister Himanta Biswa Sarma had launched a scathing attack on Sivasagar MLA and Raijor Dal Chief Akhil Gogoi on October 6, accusing him of politicizing the death of cultural icon Zubin Garg. The Chief Minister had alleged that Gogoi's sudden display of concern had been politically motivated rather than a genuine tribute to the late artist. Speaking to reporters, Sarma had said that Akhil Gogoi had never shown himself as a fan of Zubin Garg, questioning whether he had ever posted about Garg's songs or attended any of his functions. He had described Gogoi's actions as a case of doing politics with a dead person, which he had termed as awful. Sarma has also drawn parallels between Gogoi and event manager Shamganu Mahanda, noting that both had demanded a probe by the CBI and the NIA into Garg's death in Singapore. He had stated that their demands were not driven by justice but by an attempt to create political noise. The Chief Minister had further criticized social media narratives surrounding the singer's death, claiming that two distinct groups were leading the discourse through fans of Zubin Garg and others allegedly trying to use the incident to attack the BJP, many of whom he had said had never even listened to his songs. Zubin Garg, one of Assam's most beloved musicians, had passed away under mysterious circumstances in Singapore, prompting widespread grief and speculation across the state. The Singapore authorities had completed a post-mortem and handed the report to his wife, Garima Saigia, with the Assam government stating that any public discourse would be at her discretion. Assam Chief Minister Himanta Biswa Sarma had reiterated his opposition to the VIP culture while addressing a gathering on October 5. He had declared that even his own security cover should be withdrawn
to set an example for others. Sharma had said that he had strongly opposed the VIP culture and would have linked to remove his own security. Referring to the incident involving singer Zubin Garg, he had said that it had shown how much people disliked such privileges, adding that there should not have been any VIP security at all. The Chief Minister had further stated that his government had drastically reduced the number of police personnel assigned for VIP protection from around 4,000 earlier to just 600, redeploying the rest for road duties and public service. He had also argued that ministers and MLAs should not have personal security officers, as such arrangements created barriers between elected representatives and the public. জুবিন গাৰ্গৰ ঘটনাৰ সময়ত দেখিলে মানুহে ভিআইপি কিমান বেয়া পায় সেইকাৰণে ভিআইপি তো থাকিবই নালাগে মইতো বিচাৰো মোৰ পৰাও এইবোৰ উঠাই লৈ যাওঁ এতিয়া উপায় নহলে আমিতো কাবাক নিৰাপত্তা দিব লাগে কিন্তু মইতো নিজে বিচাৰো যে মোৰ মন্ত্ৰী এমএলএ কাৰো লগত সিকিউৰিটি থাকিব নালাগে আমি কিমানৰ পিএছও উঠাই দিছো আটাইতকৈ ক'ব গ'লে আমাৰ দিনতে 4000 পিএছওৰ পৰা আমি 600 লৈকে নমাই দিছো আৰু সেই পুলিচবিলাক এতিয়া ৰাস্তা ডিউটি কৰে In a distressing incident highlighting the poor state of rural infrastructure, a pregnant woman from Tamsara, Tripurapunji under the Ramakrishna Nagar constituency of Sribhumi district had been carried to a hospital on a bamboo stretcher after an ambulance had failed to reach her due to the deplorable condition of the road. A video of the incident had gone viral on social media, attracting widespread criticism from the region's lack of connectivity and development. Locals had said that the muddy, uneven track leading to the village had deteriorated so severely that it could hardly be called a road. With no vehicle able to navigate the area, villagers had constructed a makeshift bamboo stretcher and carried the expectant mother on their shoulders for several kilometers to access medical care. Residents had expressed deep frustration, pointing out that despite Ramakrishna Nagar MLA being from the BJP and the MB of Sribhumi representing Vidyanagar Radabari, no visible efforts had been made to improve the village's infrastructure. A local resident had remarked that the situation had become unbearable during emergencies and that repeated appeals to authorities had gone unanswered. खाई नहीं तो এই দেখো ভাই আমরা কত কষ্ট বসবাস করি আর আমরা গ্রামের রাস্তা দেখো ডেলিভারি লয়ে যাই আর এই দেখো এটা করে দি মানুষ আছে দেখো In a tragic road accident that occurred around 8 p.m. at Umsaun Nongkra along National Highway 6 in Ripoi district, two men lost their lives on the spot, while another one sustained serious injuries. The truck was reportedly travelling from Shillong towards Nongpo when, upon reaching the area, it suddenly swerved to the opposite lane and rammed into a Bolero vehicle, resulting in a violent crash that completely wrecked the Bolero. The impact claimed the lives of two men instantly, while one person sustained critical injuries. The injured victim was immediately rushed to Nongpo Civil Hospital for medical treatment, while police personnel worked to retrieve the bodies of the deceased and have since launched an investigation into the incident. It has been reported that the Bolero involved in the crash belonged to the Department of Sports and Youth Affairs. Upon receiving the report, the Ripoi police swiftly arrived at the scene to assist in rescue operations and to conduct a detailed investigation to ascertain the exact cause of the accident and the identities of those involved in the unfortunate incident.
Madhya Pradesh Chief Minister Dr. Mohan Yadav on Sunday pitched for stronger investment, tourism and trade partnerships between Madhya Pradesh and Assam during the Invest Madhya Pradesh interactive session held at the Hotel Radisson Blu in Guwahati. Addressing the media after the event, Dr. Yadav described Guwahati as India's gateway to the east and highlighted Assam's potential as a strategic partner for industrial and tourism collaborations. He said Madhya Pradesh is focusing on developing tourism in collaboration with northeastern states and pointed out similarities between the two states in forest and wildlife tourism. Dr. Yadav also mentioned discussions with several major industrial groups and entrepreneurs from Assam who expressed interest in investing in Madhya Pradesh across sectors such as cement, steel, paper, pharmaceuticals, logistics and ecotourism. He held meetings with representatives from Star Cement Private Limited, Lohia Group Assam, Bengal Navigation Private Limited and several others, highlighting opportunities for mutual growth. यहाँ असम की राजधानी गुवाहाटी से जो भारत का प्रवेश द्वार है, एक तरह से पूर्वोत्तर भारत का, यहाँ गुवाहाटी में आज सफलतापूर्वक आयोजन किया। खास करके पेट्रोकेमिकल, सीमेंट, फूड प्रोसेसिंग, चाय, फार्मा, टूरिज्म, वेलनेस इत्यादि कई सेक्टरों में बड़ी संभावनाओं के लिए औद्योगिक साझेदारी वाले विषय पर हमने विस्तार से चर्चा की है और एक नई संभावना का मंच भी दिया। मध्य प्रदेश कई प्रकार से कई कामों में लगातार अग्रगण्य भूमिका निभा रहा है। जैसे टूरिज्म के सेक्टर में हम बहुत अच्छे से चल रहे हैं। इंडस्ट्रियों को लेकर के भी पिछले 2 साल से जब से हमारी सरकार बनी है, हैवी इंडस्ट्री हो, एमएसएमई हो, लघु कुटीर उद्योग हो, सभी सेक्टर में, सर्विस सेक्टर में, हेल्थ सेक्टर में, हर सेक्टर में अब हमारी बहुत अच्छी संभावना बन गई है। उसी बात को लेकर के जब यहाँ हम आए तो मुझे इस बात का संतोष है कि जिस प्रकार की भावना से हम आए थे उसका समाधान भी हमको मिला। टूरिज्म के सेक्टर में खास करके फॉरेस्ट टूरिज्म में हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में 9 हमारे टाइगर रिजर्व हैं और ऐसे में टाइगर फॉरेस्ट के इस काजीरंगा और ऐसे स्थान पर जब मैं गया जहाँ हमारे यहाँ पे बांधवगढ़ में और कान्हा में हाथी आ गए, लगभग 100 के आसपास हाथी हैं। यहाँ काजीरंगा में हाथी को लेकर के बहुत अच्छा प्रबंधन किया जाता है। ऐसे में अब भविष्य की दृष्टि से हमारे वन्य प्राणी का भी आपस में हस्तांतरण के मैं आज सीएम से मिलने वाला हूँ और मध्य प्रदेश और असम के बीच वन्य प्राणियों का आदान प्रदान, घड़ियाल, मगरमच्छ, भैंसा इत्यादि हम आपस में जानवरों का भी आदान प्रदान कर सकते हैं। चीता प्रोजेक्ट हमारा सफलता के साथ चल ही रहा है और जैसे मैंने बताया कि खाद्य प्रसंस्करण, पेट्रोकेमिकल्स, रिन्यूएबल एनर्जी, टूरिज्म ऐसे कई क्षेत्रों में असम के निवेशक भी हमारे से जुड़ना चाहते हैं और हमारे वहाँ के लोग भी यहाँ आना चाहते हैं। युवाओं, कलाकारों और विश्वविद्यालयों के बीच परस्पर संबंध कैसे बढ़े, इस दिशा में भी हम काम करेंगे। भोपाल गुवाहाटी की सीधी उड़ान भविष्य में हो, इस तरह से भी हम बात कर सकते हैं। हस्तशिल्प और बांस से बनी खासकर असम के सिल्क में भी हमारे यहाँ का भी सिल्क बहुत प्रसिद्ध है। ये जो हमारी स्वाभाविक उद्यमिता का जो अपना गुण है, उस गुणों के आधार पर अच्छी संभावना, ऐसे में कुछ प्रमुख ग्रुप से आज मेरी चर्चा भी हुई है। इसमें श्री सीमेंट भारत शर्मा जो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है, ये बांगर जी का अच्छा ग्रुप है जिस पर वो ऑलरेडी हमारे यहाँ काम भी कर रहे हैं और आगे बढ़ेंगे। एक एसएम ग्रुप, रियल इस्टेट, फाइनेंस, कंस्ट्रक्शन, हॉस्पिटैलिटी, मेटलर्जी, ये राजीव अग्रवाल जी से हमारी मुलाकात हुई है। भविष्य ये भी अपने यहाँ से जुड़ना चाहते हैं। एक लोहिया समूह है जो स्टील, सीमेंट, एसी ब्लॉक, फेरो मिश्र धातु, पेपर, रियल इस्टेट, लॉजिस्टिक इत्यादि में काम करते हैं। कैलाश चंद्र लोहिया जी, उनके तरफ से राहुल लोहिया जी से हमारी मीटिंग हुई है। स्टार सीमेंट प्राइवेट लिमिटेड, ये बड़ा ग्रुप है जिसके बहुत सारे यूनिट 7 स्टार ये जो हमारी 7 सिस्टर से लेकर के बंगाल, बिहार स्टार काफ़ी बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन कर रहा है और वो राजस्थान में भी ढूंढ रहा जगह और मध्य प्रदेश से भी संभावना लेके चल रहे हैं। भविष्य में अगर पूरे देश में इनको अपने ऑर्डर लेना है और माल की सप्लाई करना तो मध्य प्रदेश के बिना बात बनती दिखाई नहीं देती।
Security forces in Manipur have stepped up to counter-insurgency operations, arresting multiple insurgents and extortionists, seizing arms, narcotics and huge cash while successfully defusing an IED in Jiribam district. On October 5, an IED planted at Mahakbasti, Jiribam, was safely neutralized, averting a major threat to public safety. Earlier, 2 persons were arrested in Imphal East, with security forces recovering Rs 38.2 lakh in cash and 2 kg of WY tablets from the possession. In a separate operation the same day, an active cadre of KCP PWG Rajkumar Sana Toy Singh, 18, was arrested from Imphal West. A .32 pistol, magazine and mobile phone were recovered from him. 2 others, Sarangti Dinesh Singh and Kundrakpa Mohan Singh, 25, were held in Bishnupur district for extorting money from vehicles along NH2. A 2-wheeler and a mobile phone were seized. On October 4, security forces apprehended 2 RPF PLA cadres in Bishnupur district. Kumuk Champirin Mayday alias Tiran 40 was arrested for extorting money from schools, colleges and shopkeepers, while Kamimbam Manglembam Singh, also known as Sunny 46, was caught monitoring and relaying security movements. Phones and SIM cards were seized from both. Meanwhile, Manipur police intensified area domination exercises and installed 115 checkpoints across the state. Vehicle checks led to the removal of tinted films from 3 vehicles. Authorities have urged citizens not to spread or believe in rumors, warning that circulation of fake social media posts and unverified videos will invite strict legal action. The public has also been appealed to return looted arms and ammunition immediately to police or security forces. At least 24 people, including 7 children, were killed after heavy rainfall triggered massive landslides across the Darjeeling district in West Bengal on Sunday, officials said. However, the situation is gradually stabilizing, said DG and IG of North Bengal Police, Rajesh Kumar Yadav, who went to examine the affected sites. The landslides flattened homes, damaged roads and cut off access to several remote areas. Well, according to reports compiled by the NDRF and the district administration, fatalities were reported from several locations, including Sarsali, Jaspirgaon, Mirik Basti, Dhargaon, Mechi, Nagrakta and the Mirik Lake area. Meanwhile, authorities in North Bengal are on high alert after Bhutan's Tala hydropower dam began overflowing due to a technical failure. ओके मैं रिंचन लामा और मेरे मदर इन लॉ एंड फादर इन लॉ थे वो और एक सिस्टर भी थे। तो अचानक ये हादसा कैसे हुआ? और ये हाँ जी हम लोग साथ में ही सो रहे थे, ऊपर में हम लोग बाहर सोते मेन डाइनिंग हॉल पे, और मम्मी पापा और एक सिस्टर थी वो आई थी नेपाल से, इनकी बेटी, वो लोग अंदर सोए हुए थे। से ये बारिश हो रहे थे बहुत, सो अराउंड 2:30 के टाइम पे ये इंसिडेंट हो गया था। सो हम लोग को रात में पता ही नहीं चला कि ये सब ऐसे हुआ। सो सुबह मैंने 6:25 पे देखा तो फिर घर पे पानी आ रखा हुआ है, फिर मैंने देखा कि दरवाजे मलबे लैंडस्लाइड हो रखे। और उसमें क्या हुआ? हाँ जी हाँ जी, मम्मी और पापा थे मेरे और एक सिस्टर। तो उसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन हुआ और हाँ जी हाँ जी। में अभी क्या स्थिति है? लैंडस्लाइड तो अब हर जगह है ऐसे ही है ना, हर जगह ऐसे ही है, नॉट ओनली मिरिक और दार्जिलिंग में अब कई ऐसे जगह है कि वहाँ पर भी बहुत सारे वो अभी तक हमारे रिलेटिव्स अभी पहुँचे भी नहीं है यहाँ पर। सो इट विल टेक टाइम आई थिंक। The National Disaster Response Force conducted flood and water rescue operations in the flood-affected areas and evacuated over 160 people. According to the rescue team, a total of 105 people were evacuated by boats, while another 55 were rescued via zip lines in Jalpaiguri. The team also recovered one deceased individual during the operations. बड़ा दर्दनाक हालत है इस बार। अभी जो बारिश हुआ अभी 4th को रात में, जो मतलब ऐसे तो मतलब कंटिन्यूअस बारिश था, मतलब उस दिन शाम से ही, लेकिन रात को जो 2-2:30 बजे जो बारिश हुआ, उस बारिश के कारण जो क्षति हुआ है, मतलब जो नुकसान हुआ है, मतलब इतना हेवी रेनफॉल था, नियर अबाउट मतलब 200 mm जितना, मतलब बारिश ऐसे लग रहा था जैसे बादल फटा है। थंडरस्टॉर्म भी उतना ही था। तो अभी मतलब मैं मिरिक का बात पहले करता हूँ क्योंकि मैं मिरिक से बिलोंग करता हूँ। तो मिरिक में टोटल 11 कैजुअलिटीज हुआ है, मतलब उसमें से 5 कैजुअलिटीज जो है
मिरिक म्यूनसिपालिटी एरिया में हुआ है और 6 कैजुअलिटीज जो है मिरिक ब्लॉक एरिया में हुआ है। तो ये हमारा जो यहाँ सोरनी चिपीबान है, मेची ढाड़ा गांव बोल के है, वहाँ कोई एक पत्थर गिरने से रोड ब्लॉकेट हो गया, तो पानी जो है वो थोड़ा सा गांव की तरफ मतलब डाइवर्ट हो गया। तो एक ही घर में मतलब 4 जन सो रहे थे, तो एक ही घर के जो 4 जन है वो मतलब एकदम स्पॉट में ही डेथ हो गए। मतलब 2 जन को तो हॉस्पिटल ले जाते मतलब ऑन द वे डेथ हो गया, बच्चे लोग थे। और जो 2 थे वो बाद में रेस्क्यू करना पड़ा क्योंकि वो मलबे में दबे थे। मोटा मोटी 1-1.5 घंटे के बाद में उनको निकाला गया। मिरिक में जो था मतलब डे सेंटर के पास वार्ड नंबर 3 में 3 कैजुअलिटीज हुआ, उनको भी बड़े मुश्किल से मतलब एनडीआरएफ टीम भी पहुंची तो उनकी मदद से निकाला गया। उसके बाद में 1 नंबर वार्ड में निस गांव में 1 कैजुअलिटी हुआ है, 9 नंबर वार्ड में 1 कैजुअलिटी हुआ है और मिरिक बस्ती जसबीर गांव में 2 कैजुअलिटीज हुआ है। तो इसी तरह दार्जिलिंग में जो है मतलब टोटल अभी तक 18 कैजुअलिटीज मतलब हैज बीन रिपोर्टेड अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल रिपोर्ट। तो कहाँ हुआ है सर ये आपका जोर बंगलो पीएस जो है उसमें 4 कैजुअलिटीज हैं। उसी तरह सुकिया पोखरी पीएस में 2 कैजुअलिटीज हैं। उसी तरह सदर पीएस में 1 कैजुअलिटीज है ना। और मिरिक में 11 है ना। आपने देखा होगा कि ये जो दुधिया का जो ब्रिज है जो 1970 में बना हुआ था, वो देखा होगा कि वो टोटली मतलब डैमेज हो गया है। सो मिरिक सिलीगुड़ी का जो कनेक्टिविटी है इट इज टोटली डिसकनेक्टेड। वो तो खुदा खास्ता एक पीएमजी से एक रोड बना हुआ है बोटुंग होके, तो अभी ट्रांसपोर्टेशन जो है मतलब कम्युनिकेशन वहां से हो रहा है। जो नुकसान का बात करता हूँ, कैजुअलिटीज तो 11 हुआ है, लेकिन जो नुकसान है वो बहुत हुआ है। मतलब मिरिक में ही नहीं, मतलब आप पोखरियाबुंग में जाइए, पोखरियाबुंग में जाएंगे नीचे रांगबांग वैली जो कि मतलब होम स्टे के लिए बड़ा प्रसिद्ध है, दैट इज टोटली डैमेज्ड एकदम। जो रांगबांग खोला है वो आके मतलब जो डिजास्टर हुआ है वहां पर मतलब बहुत सारे मतलब होम स्टे डैमेजेस हो गया है, रोड डैमेज है, मतलब मोटा मोटी 3-4 तो मतलब जो है ब्रिज डैमेज हो गया, सिसने में डैमेज हुआ है, रांगबांग में डैमेज हुआ है, यहाँ हुआ है। अच्छा, रिवर एम्बैंकमेंट खराब होने के चलते यहाँ जो यहाँ पर बुंकुलुंग है, बेसीटार है, वहां पर मतलब गांव में पानी घुस के मतलब एग्रीकल्चरल नुकसान हुआ है। एआरडी डिपार्टमेंट की तरफ मतलब कितने ही मतलब जो है पशु प्राणी वो भी नुकसान हो गए। BJP leader Dilip Ghosh on Monday blamed the drains and rivers and said TMC leaders have encroached on the land and sold it to people. North Bengal is completely submerged in floods. He stated that a carnival is happening here, but the people of North Bengal are being swept away. The chief minister goes everywhere and just gets her photos clicked. दादा, नॉर्थ बंगाल में भारी बारिश एवं उससे बाढ़ आने के कारण कई लोग चपेट में आए हैं, 20 आदमी मरे हैं। देखिए, बारिश तो देश भर में हो रही है, दुनिया भर में हो रही है, लेकिन लापरवाही सरकार की तरफ से इसमें जीवन हानि हो रही है। और इसका कारण यह है कि सालों से ना तो ड्रेन ना नदी नाला को साफ सफाई किया गया, बल्कि टीएमसी के नेता लोग पूरा एनक्रोचमेंट करके जमीन लोगों को बेच दिए। जमीन नदी के अंदर तक घर बन गया है, तो पानी जाएगा कहाँ? और उसी का तो घटना होना ही था। केवल राजनीति और पैसा छोड़कर ये सरकार के पास कुछ नहीं है। अब देखिए, यहाँ आरामबाग बर्धमान में पानी आ गया तो ममता बनर्जी डीवीसी को दोषारोपण करते हैं, झारखंड के ऊपर मर देते हैं। कलकत्ता में पानी बारिश में 2 दिन 3 दिन तक जमा के रहा तो यूपी बिहार को दोष दे दिए। अब नॉर्थ बंगाल पूरा बह गया, गाँव के गाँव, कितने लोग मरे कोई हिसाब नहीं अभी तक। किसको दोषी करेंगे? यहाँ नाच रहे हैं, कार्निवल हो रही है और बजा बजा के खूब मजा ले रहे हैं, और नॉर्थ बंगाल लोग डर रहे हैं। बार बार नॉर्थ बंगाल लोग ये कंप्लेन करते हैं कि हमारा कोई देखता नहीं है, हमारा कोई खोज नहीं करता, फिर दोबारा साबित हो जाएगी। आज जाएंगे नॉर्थ बंगाल मुख्यमंत्री, 3 बजे तक पहुंचेंगे और वहाँ का तो हर जगह आते हैं, फोटो खींचते हैं, लेकिन जिनका सर्वनाश हो गया, बर्बाद हो गया, उसका क्या होगा? अभी जाके वो बोलेंगे इतना 1000 रुपया बर्बाद हो गया, केंद्र सरकार पैसा दो, यही उनकी डिमांड रहेगी। ढूंढ के देख लेंगे ऊपर से आसमान से कितना हुआ क्या हुआ, एक बड़ा सा डिमांड चार्ट दिल्ली को भेज देंगे और फिर आंदोलन चलेगा, सरकार पैसा नहीं दिया, दिल्ली पैसा नहीं दिया, यही उनकी ड्रामा चलती है, कोई जिम्मेदारी नहीं है। कल प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया है इस आपदा को लेकर, जिसमें बताया कि जो लोगों मरे उनके नजराएं उनके साथ। नहीं, हम लोग देखे हैं उड़ीसा में जब अम्फान आया था, बंगाल में माननीय प्रधानमंत्री खुद आए थे, हवाई सर्वेक्षण किए थे और ममता बनर्जी उनके साथ भी गई थी। तो ममता प्राइम मिनिस्टर वहाँ से दुख प्रकट करते हैं, आ जाते हैं, ये लोग नहीं पहुँच पाते, इनका कोई उपस्थित नहीं। और उत्तर बंगाल में जहाँ बाढ़ चल रहा है, हमारे बीजेपी के जितने एमएलए हैं सब स्पॉट में जाकर निरीक्षण कर रहे हैं, लोगों को मिल रहे हैं। सरकार कहाँ है?
मौज मस्ती उत्सव में मेला खेला में बिजी है। ऐसे कब तक चल सकता है? 15 साल में जो भी व्यवस्था था वो चरमरा गया, नया व्यवस्था बनाने एनडीआरएफ का टीम तक नहीं बन पाई है और हर साल यहाँ बाढ़ तूफान आता है। Meanwhile, West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee expressed deep concern over the severe flooding in both North and South Bengal. Banerjee also conveyed condolences to the families of the deceased and promised immediate assistance. Prime Minister Narendra Modi, Union Home Minister Amit Shah and President Draupadi Murmu also expressed deep pain and regret over the loss of life in the Darjeeling mishap. That's all for now. Keep watching Hornbill TV.